Hello students, hope you all are well. Let us start our next video on the basis of elements of accounts standard 11 part 1, 7th chapter, cash book. Very interesting chapter. Once if you are able to understand which entry will go which side, either it is a debit side or it is a credit side, then it will be very easy for you. The three types of cash books are there: single column cash book, double column cash book, and triple column cash book. Apart from that, one more cash book is there, that is called petty cash book. Is not that much important, but next video that also I will explain it. Now, previous video I told you one illustration from your textbook, that is sixth illustration, that was the triple column cash book. Like that one sum from your exercise that I want to do it, that you follow it, that is page number 100 and according to your textbook, page number 186, page number 186 of question number 8. That is also triple column cash book, and that I want to solve it one by one entry, that you try to understand which one will go which side, which amount will come in which column, either in a debit column, credit column of discount, cash, bank. Similarly, the debit column of credit column of discount, cash, bank of debit side and credit sides both. Let us see the question number 8 of page number 186. I have drawn this format. From the following transactions, prepare 3-columnar cash book of Namrata 2015, the August 1st. First we will write the opening balance, opening cash balance of 7,000 and opening bank balance of 6,000. This is given bank balance. This is not given bank overdraft. So before writing you think where it will go. One will go in cash column, another will go in the bank column. Both are in the debit sides, because bank overdraft balance is not given. So you will write it here, that is first date. This is the format in the books of Namrata, cash book, triple column. This is the format. One column I have not drawn because page is not there, that is received column, but here it is drawn. Date, particulars, LF, discount, cash, bank, date, particulars, payment, voucher, that is LF, discount, cash, bank, credit and debit. First we will write to balance BD, and cash column it is 7,000, discount column nothing is given, cash column 7,000 and bank column it is 6,000. First one is over. Now second one. I will keep your book here, I will read it and I will write the answer here, that will follow it. Correct? Okay. Next is coming number 3. Cash purchase 6,000, cash sales 7,000. Cash purchase 6,000, it will go to the credit side in the cash column. Cash sales 7,000, it will go in the debit side in the cash column. Goods purchase, goods sold. So purchase is 6,000. That is which date? Date is 3. To write by purchase. How much? 6,000. Cash column. Correct? Dash is here. And here it will come 3 to sales. Cash column. How much? 7,000. Bank column nothing is there, discount column nothing is there. So this is goods purchased and you have given a cash. This is goods sold, you have received a cash. Next is coming the number 5. Rupees 3,000 is deposited into the bank. Number 5, rupees 3,000 is the deposit into the bank. So bank balance is increasing. Which date? Date is coming 5. Bank balance is increasing how much? 3,000. So you write bank balance is increasing 3,000 and from cash balance it is decreasing 3,000.
Contra entry, so you write C. Here also you write, which column you wrote side C? LF column. Now bank column you wrote, so here you write to cash. And the cash column you wrote, here you write by bank. Date is 5. So बैंक में डिपॉजिट हुआ, कैश से विड्रॉल हुआ. It is debited into the bank and credited in the cash. The entry is bank account debit to cash and cash account credit by bank. Contra entry number 5 is over. Number 6, as more funds are required in the business, a loan of rupees 5,000 is taken from Prabhu bearing 8% interest rate. 8% interest rate, that is not a matter for you now. Only you have taken a loan of rupees 5,000 from whom? From Prabhu. So your entry is cash account debit to loan. कैश में आपका आएगा 6 तारीख को 5,000. 6 तारीख को 5,000 कैश में आएगा. 6 तारीख को 5,000 एज प्रभुज लोन अकाउंट. Here dash, here dash, here dash. Cash is coming 5,000. 6 date पे loan you have taken from Prabhu. Next is coming 8. Goods of rupees 3,000 sold to Mansi at 10% cash discount. 10% cash discount याद रखना है. ट्रेड डिस्काउंट होगा तो लेस करना है, लिखना नहीं है. लेकिन कैश डिस्काउंट डिडक्ट भी करना है, लिखना भी है. 10% of 3,300. Mansi issue a check of the necessary amount which is deposited in the bank. How much check you will get? 2,700. And how much discount you are getting? 300. So 300 discount column, 2,700 bank column, and you sold the goods, so only to sales account 8 to sales account. Discount column how much? 300. Cash column nothing is given. Bank column 2,700. Correct? You have sold goods for that. 8 is over. Now 8 का बाद 10. 10 is coming. The goods of rupees 7,000 purchased from the Dhrubs and 50% of the amount immediately paid by check. See, this is a cash transactions, but not full amount is cash. Out of the 7,000, 50% amount it is paid. So check of rupees, so goods of rupees 7,000 purchased. We have purchased the goods and we have given it check immediately कैश दिया, तो कैश कॉलम क्रेडिट होगा. 7,000 गुड्स परचेस करके 50% अमाउंट पेमेंट दिया 10 तारीख को, तो विल राइट इट हियर बाय परचेस. 50% अमाउंट कैश कॉलम से निकल गया. 50% अमाउंट हाउ मच? 50% ऑफ 7,000 इज कमिंग 3,500. Nothing is here, nothing is here. Clear? Remaining 50% they did not say anything, so we will not write anything regarding the remaining 50%. Next is coming 12. Salary 3,000, wages 5,000, stationery 200, 500. Salary 3,000, wages 500 and stationery 200 are paid by check. All three will go to the credit sides. Which date? The date is coming 12. Here I have to write here by salary 12, by wages or 12 by stationery. Pace is not there, so I wrote in short form. You will write in full form. Salary amount is how much? Salary 3,500 और 200. Salary is 3,000, चेक से पेमेंट हुआ. Wages is 500 and stationery is 200. This is nothing, this is nothing, this is nothing. Here is dash, here is dash, here is dash. All three are paid by check, so all three are coming in the bank column. Now which date is gone? 12 is gone. Now 14. Commission of rupees 1,000 and brokerage of rupees 500 received by cash. So cash box debit में आएगा. Commission of rupees 1,000
एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹500 रिसीव्ड बाय कैश। कौन सा डेट में है? 14 को। 2 कमीशंस एंड 14 को 2 ब्रोकरेज। कमीशन इज 1000 कैश कॉलम में and brokerage is 500 also cash column. Both are getting through cash, so no amount is coming in bank column, no amount is coming in discount column. Both you are getting through cash. So after 14 is coming after 16. Bank credited. That day I told if it is bank credited we will write in debit column, if bank debited we will write in credit column, but bank column. Bank credited, so we will write debit column but bank column. Bank credited interest of ₹100 on the balance of नम्रता बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट किया तो हमको क्या करना है? डेबिट में लिखना है। कौन सा कॉलम में? बैंक कॉलम में। कितना? 100। बाकी 2 कॉलम में डैश है। किसके लिए आया? दिस इज कॉल्ड बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, सो विल राइट टू इंटरेस्ट। वन सेकेंड, बैंक क्रेडिट करेगा तो मैं डेबिट में लिखूँ, बैंक डेबिट करेगा तो क्रेडिट में लिखूँ, लेकिन बैंक कॉलम में, कैश में नहीं। 16 इज ओवर, कैश कॉलम में नहीं लिखना है, बैंक कॉलम में लिखना है ना। 17, 2000 विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। 2000 विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, but electricity bill you have not paid on that day. You have taken the money from the bank to pay the electricity bill. Don't write the electricity account, bill account, it will be wrong. Only this is a cash withdrawn from the bank for business purpose, so it is a contra entry. Which date it is coming? The date is coming 17. 2000 withdrawn from the bank, withdrawn from the bank 17, so बैंक में क्रेडिट होगा। 2000 विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक मतलब बैंक में क्रेडिट होगा और कैश में डेबिट होगा, करेक्ट। डेट इज 17। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रा एंट्री, करेक्ट। यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश। कैश में आया तो क्या लिखना है? टू बैंक। बैंक में आया तो क्या लिखना है? बाय कैश। दिस इज द सिस्टम। वन सेकेंड, यू हैव टेकन मनी फ्रॉम द बैंक, तो बैंक क्रेडिट होगा। एंड कहाँ पैसा आया? कैश में, तो कैश में डेबिट हो गया। पहले ये दोनों अमाउंट लिख दो, बाद में बैंक है तो बैंक कॉलम है तो कैश आएगा और कैश कॉलम में है तो बैंक आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री, डेट इज 17। नेक्स्ट इज कमिंग 20। 1000 पेड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड द रिमेनिंग 1000 इज टेकन फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। जो 2000 आपने जो विड्रॉल किया था उसके अंदर 1000 आपने इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट दिया तो कैश से निकल जाएगा। और 1000 यू हैव टेकन फॉर होम पर्पस ड्राइंग। व्हिच डेट इट इज गिवन? द 20। तो 20 में एक आएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कैश से निकल जाएगा 1000, यहाँ डैश, यहाँ डैश। और एक बार 20 में यू हैव टेकन मनी फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट में और एक बार 1000। यस, दिस इज द मनी यू हैव टेकन कैश से, जो 2000 रुपया जो कैश में आया था विच यू हैव टेकन फ्रॉम द बैंक ऑन द 17। बैंक से विड्रॉल किया और कैश बॉक्स में रखा। वो 1000 इलेक्ट्रिक बिल 2000 के लिए उठाया था, लेकिन 1000 इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट दिया और 1000 यू हैव टेकन फॉर पर्सनल यूज। इट इज गिवन दैट 1000 पेड फॉर द इलेक्ट्रिक बिल एंड द रिमेनिंग 1000 इज टेकन फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, सो ड्राइंग्स अकाउंट इज कमिंग, करेक्ट। नेक्स्ट इज कमिंग 22। गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू पार्थ, ही इशूड ए चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 5000 का 10% 500, विच इज डिपोजिटेड इमीडिएटली इनटू द बैंक। तो इसका मतलब होता है यू हैव सोल्ड द गुड्स, मतलब डेबिट में आएगा। सोल्ड द गुड्स मतलब डेबिट में आएगा टू सेल्स अकाउंट एंड यू गॉट ए चेक, हाउ मच? 4500 चेक यू हैव रिसीव, सो बैंक कॉलम में 4500 एंड 10% ऑफ 5000 विच इज कमिंग 500 इज द कमिंग इन द डिस्काउंट कॉलम। तो 22।
टू सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट कॉलम में 500, बैंक कॉलम में 4,500। दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डिस्काउंट कॉलम में 500 और 6,500। You have received a check for the necessary amount after deducting 10%, which is immediately deposited into the bank. Now 25, the check issued by part is dishonored. Yes, this is the most important. 25th में देखो, 25th में हुआ, that is check which you have received on 22nd, that check it was check issued by the part is dishonored. Dishonored मतलब payment is not done, मतलब bank has not received the, मतलब part refused to pay the money. In such cases I told the reverse entry. Reverse entry means dishonored होगा तो बैंक में डेबिट हुआ तो अभी बैंक में क्रेडिट कर दूँ, और पार्थ अकाउंट में गया, कौन सा डेट पे है 25, और यहाँ टू सेल्स लिखा था लेकिन यहाँ बाई पार्थ हो जाएगा, और बैंक कॉलम में बैंक का जो डेबिट हुआ था वो बैंक का क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आएगा आपका मन में, डिस्काउंट कॉलम में जो डेबिट हुआ था वो डिस्काउंट कॉलम का क्रेडिट करूँ कि नहीं करूँ। 1 second you try to understand. The old book and new book, there is a difference of that. When you have received a check, that time you have given a discount. This is discount allowed, and the check became dishonored. That is the fault of part. That is not our fault. So once again, we will write the reverse entry which we debited in the bank column, that will write in the credit column, and part account will come, but discount amount will not go to the credit column. That you keep in mind. Reverse entry will pass, but only the bank column amount will pass. This is a loss for him. He has to suffer. This is his mistake, and due to that he has to get the loss of 500, which discount allow हम लोग किया था. That is the discount allow for that. So we should not write the discount column once again here. Only the bank column will write, the bank amount will write here. डेबिट किया, क्रेडिट करो, लेकिन बाई सेल्स नहीं करना है. यहाँ टू सेल्स, वहाँ बाई सेल्स नहीं करना है, वहाँ बाई पार्थ अकाउंट विल कम. सो याद रखना है, डिस्काउंट इफ इट इज डेबिटेड, डिजोनर होगा तो क्रेडिट नहीं करना है. डिस्काउंट इफ इट इज क्रेडिटेड, डिजोनर होगा तो डेबिट नहीं करना है. रिवर्स एंट्री ओनली विल कम फॉर बैंक ट्रांजेक्शन्स, बैंक अमाउंट. नेक्स्ट इज कमिंग द 28. 28 it is given. The check of rupees 6050 is issued to Bansi towards an old date. Total date was 6100. Issued किया चेक इशू किया मतलब बैंक में क्रेडिट होगा, मतलब बैंक बैलेंस was decreasing. If bank balance is decreasing, it will go to the bank credit column. If bank balance is increasing, it will come to the bank debit column. As we have given the check, so bank balance is decreasing, so we will write in the bank column credit. How much? 6050, और उसको देना था 6100, मतलब we got a 50 rupees discount. 28 में 28 में किसको दिया चेक? बांसी अकाउंट. डिस्काउंट कॉलम में 50, कैश कॉलम में कुछ नहीं है, और बैंक कॉलम में 6050. गॉट इट? नो एंट्री इन द कैश कॉलम. बैंक में 6050 गया था और 50 रुपीज डिस्काउंट. नेक्स्ट आफ्टर 20 इज कमिंग 29. गोपी हैज पेड 2000 बाय कैश फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ डेट 2040. सेम थिंग. गोपी हैज पेड मतलब वी हैव रिसीव्ड कैश, सो कैश कॉलम डेबिट में आएगा 2000 और डिस्काउंट में आएगा 40 रुपया. 29th में गोपी डिस्काउंट कॉलम में 40 रुपया और कैश कॉलम में 2000. यू हैव रिसीव ए कैश. करेक्ट? नेक्स्ट इज कमिंग 31st. 31st is something different that you have to know how to calculate the amount of 31st. I want to show it here and first let you know what is the meaning of that, then I will tell you. Here the meaning is, after keeping cash on hand of rupees 5000, remaining amount is deposited into the bank.
like that previous illustrations also like that one told. The meaning is, at present how much you are having balance in cash box. You are having two box. One is called the cash box and is called the bank box. Cash box income, this is cash box expense, this is bank box income, this is bank box expense, this is the income of cash box, this is the expense of cash box, this is the income of bank box, this is the expense of bank box. Now how much cash box you are having, how we will understand? Because before doing the last transactions is 31st. Before doing the last transactions, if I add the all cash, how much you got the cash in the month of August, these are the amount you have received from different places, and these are the amount you have paid to different places. If you add this all and if you deduct this all, then we can find out the balance of cash at present how much you are having. So if you add, this is 7 plus 7 14 plus 5 19 20 22 24 24,500. 24,500 is your total income. 24,500. Once again, 14 plus 15 plus 20 24,500. And how much you paid? 6 plus 6, that means 12, 13, 14, 14,500. 14,500 you have given. So 24,500 you have received and 14,500 you have paid. So you are having a balance at present in your cash 10,000. If you check, you will find out in your cash box you will get 10,000. Now last sentence is telling, out of the 10,000, 5,000 is given. After keeping the cash on hand 5,000, remaining amount is deposited into the bank. मतलब 10,000 के अंदर 5,000 आप कैश बॉक्स में रखो, दिस इज कैश बॉक्स में रखो, और बाकी 5,000 जो है वो बैंक में जमा करो. यू डिपोजिट रिमेनिंग 5,000 इनटू द बैंक. तो 10,000 के अंदर कैश बैंक में 5,000 जमा कर दो और 5,000 कैश बॉक्स में रखो. 5,000 बैंक में जमा करो तो वन एंट्री विल कम, बैंक कॉलम में 5,000 जमा हो जाएगा और कैश कॉलम से 5,000 विथड्रॉल हो जाएगा. करेक्ट. एंड डेट विल कम 31st, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री. डेट विल कम 31st, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री. आई टोल्ड बैंक है तो कैश लिखो और कैश होगा तो बैंक लिखो. बस ओवर. Now at last what we'll do, we will find out the balance. I told you बैलेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट डिस्काउंट कॉलम को ऐड करके छोड़ देना है. 538 840 क्लोज इट. दिस इज ओनली 50, क्लोज इट. हो गया. अभी कैश कॉलम में, कैश कॉलम 14 19 20 24,500. यहाँ भी लिखना है 24,500, बट विदाउट डूइंग दिस वन नाउ आई कैन राइट द बैलेंस 5,000 बिकॉज आई नो ये 5,000 लिखने का पहले मेरा 10,000 बैलेंस था. अब ये 5,000 लिखा तो मेरे को 5,000 ही बैलेंस होगा. इफ़ यू कैलकुलेट देन ऑल्सो विल गेट 5,000 ओनली बिकॉज दे सेड दैट वन कैश क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज कैश क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रखना है. डू अंडरस्टैंड. एक बार हम कैलकुलेशन किया था, ये 5,000 लिखने का पहले या 10,000 बैलेंस आता था, तो उसके अंदर 5,000 मैंने लिखूँ. इफ़ आई राइट 5,000 तो रिमेनिंग विल बी 5,000. सो दिस इज बाई बैलेंस CD अब 5,000. तो कैश इज ओवर. नाउ बैंक. बैंक में देखो 639 9 11 प्लस 9 20 दिस इज 21,300 I think so. 21,300. If you deduct this one, you will get the 21,300, and all if you minus from this all, this 1 2 3 4 5 6, if you add this all 6 and if you deduct, you will get the balance 5,050 I think so. चेक कर लेना है. 5050. What I have done, I added this all
and I wrote in the opposite side, and I deducted this. I deducted this plus this plus this plus this plus this plus this, all I deducted from here, and I will get the balance. This is 5050. सेम साइड में मिला तो नेक्स्ट डेट इट इज अगस्त मतलब सितंबर, सितंबर मतलब 1915. नेक्स्ट डेट राइट टू बैलेंस BD और BF. कैश कॉलम में 5000 और बैंक कॉलम में 5050. क्लोज इट. Very simple, very easy, nothing is hard. Just which way I told, systematic way, that way you will follow. I think you will not be getting any confusions. Even though if you have any doubt at any time, you are welcome for your doubt. I will clear all the doubt, and you have to make the practice. You know that one. It is not possible for me to do all the illustration and all the exercise. You have to make the practice for the remaining illustration and remaining exercise, which I have not done. And few are the hard one that I completed. Next you have to make practice for this one. See that previous illustration I told that one sum, that is Bank of India and SBI. Now it is given Bank of Baroda and SBI. This next question number 9. Opening balance State Bank of India and opening balance of Bank of Baroda. तो दो बैंक का ट्रांसफर होगा. कैश स्टेट बैंक में आएगा तो डेबिट में लिखना है, स्टेट बैंक से जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है. बैंक ऑफ बड़ौदा में आएगा तो डेबिट में लिखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा से जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है. लाइक दैट वन इलस्ट्रेशन इज गिवन, दैट इलस्ट्रेशन यू फॉलो, you will get idea. Next illustration, one petty cash book, I will explain in the next video. One illustration as well as the one exercise, both I will do, that you will understand. Hope you are understanding. Okay, bye, all the best.